Hi guys and welcome back to yet another exciting episode of Female Cricket Live। आज के शो पर हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का मैच प्रीव्यू और फैंटेसी पिक्स। कल का मैच जो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था उसके तरफ पहले नजर डालते हैं। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शी फॉलोड सूट फ्रॉम ऑल द टॉस विनर्स दैट वी सीन सो फार। पहले बल्लेबाजी करते शफाली वर्मा ने 50 ऑफ 31 की इनिंग्स और एलिस कैप्सी की 46 ऑफ 31 की इनिंग्स की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते एक स्ट्रॉन्ग टोटल की ओर दिल्ली कैपिटल्स बढ़ रहा था। माजरीन का 32 ऑफ 16 एंड जेस जॉनसन का 36 ऑफ 16 के चलते दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर 194 रजिस्टर किया। नडीन डी क्लर्क और सोफी डिवाइन ने दोनों ने आरसीबी के लिए दो दो विकेट्स लिए। एक स्टीप टोटल चेस करते स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने एक बेहतरीन शुरुआत दी आरसीबी को, बट इवेंचुअली आरसीबी फेल शॉर्ट बाय 25 रन्स। मारिसान कैप ने दो विकेट्स लिए और जेस जॉनसन ने 3 विकेट्स लिए, जिसके चलते दिल्ली ने आरसीबी को टारगेट चेस करने से रोक लिया। जूली, आपको क्या कहना है कल के मैच के बारे में? हमने देखा कि एक दिल्ली का कंप्लीट परफॉर्मेंस एक तरीके से कहा जा सकता है। थोड़ा फील्डिंग में कहीं चूक रह गई थोड़ी शायद, बट ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग वाइज एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने मिला हमें कि मारिसान कैप ने बॉलिंग में 2 विकेट्स लिए, रन भी काफी अच्छे बनाए। जेस जॉनसन ने स्ट्रॉन्ग फिनिश की, हालांकि उन्हें वो 3 विकेट लास्ट ओवर में मिले, बट विकेट्स आर विकेट्स नेवरदलेस। पर्पल कैप की रेस में आप नहीं देखने वाले कि आपने टेल एंडर्स को आउट किया या टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया। तो हाउ डू यू थिंक यस्टरडेज मैच पैंड आउट फॉर यू? अच्छा परफॉर्मेंस था हम दिल्ली कैपिटल्स से हम कहेंगे, क्योंकि और कल के डिस्कशन में भी जैसे हम आपने आजाद जब हमसे प्रेडिक्शंस पूछा था तो मैंने कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है ये मैच, और वैसे ही कुछ हुआ क्योंकि आरसीबी ने जो पहले 2 मैचेस जीते थे वो रिलेटिवली वीकर ऑपोजिशन के सामने थे। और कल का आई थिंक वो एक्चुअल एग्जाम था उनका कि वो एक्चुअली डब्ल्यूपीएल के अंदर उनका प्रदर्शन आने वाले मैचेस में भी कैसा हो सकता है, उससे हमें पता चला। और आई थिंक लिटमस टेस्ट, ये वर्ड आपने यूज करा था आजाद कल, तो आई थिंक ये वैसे ही लिटमस टेस्ट हुआ आरसीबी का, पर एक अच्छा फाइट उन्होंने जरूर दिया। 195 चेस कर रहे थे और केवल 25 रनों से मेरे ख्याल से छूट गए आरसीबी वो स्कोर चेस करते हुए। बट टू बिगिन विद आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। बल्ले से मैं कहूंगी शेफाली वर्मा का वो अर्धशतक, एक मैच्योर्ड इनिंग्स उनके बल्ले से हमने कल देखी। ज्यादा रैश शॉट्स नहीं खेले उन्होंने, थोड़ा सा संभल के भी खेला और जब चाहिए था तब एक्सेलरेट भी करा उन्होंने। और एलिस कैप्सी के साथ उनकी जो पार्टनरशिप हुई थी मिगलैनिंग का विकेट जाने के बाद, तो ये दो यंगस्टर्स ने जो बल्लेबाजी करी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि हमें याद है कि शेफाली वर्मा इज ऑल्सो जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, एलिस कैप्सी 19 ईयर्स ऑफ एज, तो एक अच्छा प्रदर्शन हमें ये यंगस्टर्स से देखने मिला। अंडर प्रेशर थे क्योंकि वहां पे अगर 1-2 विकेट्स जल्दी जाते तो आई डोंट थिंक वो 194 का स्कोर कर पाती दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और उसके बाद जो जेन्युइन जो ऑलराउंडर्स है दिल्ली के पास, मारिजान काप और जेस जॉनसन अपना पहला ही मैच खेल रही थी और एनेबल सदरलैंड को उन्होंने रिप्लेस करा, जिसकी भी चर्चा हम कर रहे थे। और एक अच्छा रिप्लेसमेंट हम कहेंगे अभी दिल्ली कैपिटल्स को मिला है, क्योंकि जेस जॉनसन के पास बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलती है और WBBL में वो तो मेरे ख्याल से कैप्टनशिप भी करी है उन्होंने ब्रिस्बेन हीट की, तो आई थिंक काफी एक्सपीरियंस के साथ ये प्लेयर आती है और पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट करा। तो एक ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन हमने दिल्ली के बैटर्स से देखा। बट ऑन दी अदर हैंड आई फील कि आरसीबी एक जब वो चेस कर रहे थे इतना बड़ा स्कोर, कैप्टन स्मृति मंधाना ने अच्छी शुरुआत दी थी, 74 रनों की पारी उनके बल्ले से हमें देखने मिली और पावर प्ले कंप्लीटली डोमिनेट करा। आई थिंक एक वक्त पे ऐसी सिचुएशन थी कि 6 ओवर समाप्त हो चुके थे और स्मृति ने 28 गेंदें खेली थी और केवल 8 गेंदें सोफी डिवाइन खेल पाई। तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक स्मृति के पास थी क्योंकि वो अच्छा टाइम कर रही थी बॉल को और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। पिछले मैच में उन्होंने 43 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद ये 74 रनों की पारी आई है उनके बल्ले से, तो काफी कॉन्फिडेंस भी स्मृति को देगा। और आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग आई थिंक पहली बार मैं कहूंगी इस सीजन में अभी तक टेस्ट हुआ था, क्योंकि मारिजान काप जो उनकी इन फॉर्म बॉलर है उनको भी पहले ही ओवर में काफी रन्स पड़े, स्मृति मंदाना ने उनको काफी अटैक भी करा था, तो वो भी दिखाया कि आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स वाज आल्सो टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉलिंग। और बाद में जो अच्छा एक कमबैक हुआ स्मृति की विकेट जाने के बाद, तो एक अच्छा कमबैक हमें देखने मिला दिल्ली कैपिटल से, तो आई थिंक एक अच्छी विक्ट्री हम कहेंगे डीसी के लिए थी। एंड आई थिंक
अभी हम देख सकते हैं कि द टेबल इज नाइस एंड वाइड ओपन, क्योंकि गुजरात जायंट्स को अगर हम एक्सक्लूड करें तो बाकी जो 4 और टीम है उन्होंने एक मैच हारा है अभी तक। तो यही दिखाता है ये कंपटीशन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल। जैसा कि आपने जेस जॉनसन का मेंशन किया, हम इंग्लिश में कहते हैं कि शी इज अ क्लच प्लेयर। लाइक प्रेशर सिचुएशन था वहां पे, कि अगर वहां एक और विकेट गिर जाता तो उनके पास शायद उतनी बैटिंग थी नहीं दिल्ली के पास कि एक अच्छा टोटल रजिस्टर कर पाए। उन्होंने जो मार्जान कैप के साथ जो साझेदारी की, उसके चलते एक बहुत हाई टोटल रजिस्टर किया कल दिल्ली ने। और आपने शफाली वर्मा का भी मेंशन किया कि कल मेग लैनिंग काफी जल्दी आउट हो गई थी, विच वी डोंट यूजुअली सी फ्रॉम हर, एंड इट वाज नॉट अ मेग लैनिंग टाइप ऑफ शॉट. She tried to hit it over point for a six. So definitely Shafali Verma showed a lot of maturity yesterday. Pratik, what are your views on how the Delhi team, trumped over RCB at their home venue? Well, to start off with, I think it was quite a clinical performance from Delhi Capitals because they came up against RCB, who won two back games, and for the captain Meg Lanning to depart early, and from there on, I think the way Capsy and Shafali Verma played out the bowlers was brilliant. They took the opposition and attacked each and every bowler that came out there, and we also got our answers to Shafali Verma taking on spinners because yesterday she looked quite comfortable and was elegant in her stroke play. And I think Capsy started off from where she left off against Mumbai Indians because right from her first few balls, which was against Asha, the way she got off was brilliant because even Asha is in some form after that 5 wicket haul, and to play consecutive reverse sweeps to her was something immaculate. And just like all teams, you have top order batters performing, but what stood out for me was later on Madison Cap and just Jonathan coming out there and scoring some quick runs because I think that partnership went on to define as to where the match went, and their aggressive stroke play made sure that Delhi made it to an above par total. So yeah, that was just spectacular batting for me. And another thing which I've been failing to understand is that Shriyanka Patil being given to the ball in the death overs. We've even seen in the previous games that she's handed the ball over, after the 17th over, and she's been leaking runs. So that is something that I did not quite understand, and it also made sure that Delhi got those few extra runs at the back end of it. And just the way Smriti started off was immaculate because from ball number one, she took the attack to Madison Cap, and to her favor, the ball was swinging in, and all she had to do was use the angle to flick it away or play the pull shots. So she played the angles extremely well. Sophie Devine took her time and later on latched on with those two humongous sixes over long on. Although she did falter at the end, but I'm hopeful that this little innings would give her the confidence she requires. After which we saw Sabhineni Meghna and Richa Ghosh also play good innings, but somewhere I thought, after they started losing wickets at quick intervals and Meghna did not find a partner in the other end, RCB were losing the way. And even in the penultimate over, when there was a run out chance and Meghna had to sacrifice her wicket, it would have been more convenient if the non striker would have. Just crossed over because with Meghna at the crease, they still had a glimmer of a hope to win the game. But all in all, it was very well played by Delhi Capitals, and a lot of positives also to take for RCB from here. And like you mentioned, Yazad, yesterday, this was their litmus test. But I'm happy that they came close to it and did not lose by a big margin. So a lot of positives to take away from here, and I'm hopeful they'll come stronger against Capitals at their next outing with them. Definitely, from an RCB standpoint, one of the biggest positives must be Sophie Devine's form, considering she took 2 wickets with the ball and also scored a few runs with the bat. And as we built up to yesterday's match, we discussed how RCB need her in form going into the later half of the tournament.
सो अब डिस्कस करते हैं आज का मैच जो होने वाला है यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स अब तक इस सीजन 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। पिछले सीजन भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, वह दे फिनिश लास्ट इन द पॉइंट्स टेबल। और बट दूसरी ओर यूपी एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस टीम रही इस कॉन्टेस्ट में आते वक्त, बिकॉज पिछले मैच में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को हराया था। सो इट इज अ कॉन्ट्रास्ट पर से। सो जूली, आपका क्या कहना है आज के मैच के बारे में? ये बहुत अहम मैच होगा मेरे ख्याल से गुजरात जायंट्स के लिए, क्योंकि पहले दोनों मैचेस वो हारे हैं और किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता कि 2 लॉसेस के बाद तीसरा मैच खेले और अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि इंडिविजुअली भी आई थिंक काफ़ी लो ऑन कॉन्फिडेंस हो गए गुजरात जायंट्स के प्लेयर्स, और एज अ टीम भी मेरे ख्याल से आत्मविश्वास की कमी हमें ज़रूर दिखाई देगी इस खेमे के अंदर। पर यही आई थिंक बड़े प्लेयर्स या बड़े टीमों की खासियत है कि वो कैसे बाउंस बैक करेंगे, या जिसे हम कहते हैं कि रेजिलियंस है कि नहीं इस टीम के अंदर। क्योंकि अगर आउटसाइड ऑफ द टीम अगर हम देखें तो काफ़ी दिग्गज इंडिया के एक्स प्लेयर्स है वहाँ पे, मिथाली राज हो या नुशीन अल खदीर हो, ये 2 ही नाम लिए, पर काफ़ी अच्छा थिंक टैंक भी है उनका, टीम मैनेजमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। तो क्या ये जो फॉर्मर प्लेयर्स है, क्या ये मिलकर जो गुजरात जायंट्स की टीम है उनको थोड़ा सा उनका मोराल बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ और स्ट्रेटेजीज डिवाइस हुई होगी क्या इस 1-2 दिन के ब्रेक के बीच? तो अगर वैसे कुछ हुआ है तो शायद एक अलग आउटफिट हमें गुजरात जायंट्स का आज देखने मिल सकता है। पर उनके सामने ऑफकोर्स होंगे यूपी वॉरियर्स। आई थिंक 2 मैच जो यूपी वॉरियर्स ने हारे थे, अगर उसके बाद जीजी और यूपी की मैच होती तो आई थिंक काफी इक्वल हम ये दोनों टीमों को रेट करते। बट आफ्टर दैट एम्फेटिक विन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियंस, आई थिंक यूपी वॉरियर्स विल बी वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था वो एमआई के मैच के अंदर, ऑनेस्टली किसी ने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि यूपी वो मैच जीतेगी। हालांकि एमआई वाज विदाउट देयर कैप यूजुअल कैप्टन हरमनप्रीत कौर, एंड शबनम इस्माइल वाज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मैच। बट स्टिल यूपी वॉरियर्स वेंट आउट देयर और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिला उनसे। तो आज भी यही उम्मीद है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने मिले। आई थिंक गुजरात जायंट्स के पर्सपेक्टिव से मुझे यही कहना है कि जो वो 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है उस प्लेइंग 11 के अंदर, अगर हम देखें कैप्टन बेथ मूनी हो, फीबी लिचफील्ड हो एंड एशले गार्डनर, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, अगर ये तीनों स्टेप अप करे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। हालांकि अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखें ये दोनों टीमों के बीच, तो डब्ल्यूपीएल 2023 में दोनों बार यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को हराया था। तो ये भी स्टैट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे जीजी के परस्पेक्टिव से। पर देखते हैं, आज एक नया दिन है और क्रिकेट में आई थिंक फनी थिंग्स टेंड टू हैपन इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल। सो मैं बस इतना इस स्टेटमेंट में अभी बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि एक्सपीरियंस है, सो इट डेफिनेटली मस्ट बी पुट इनटू गुड यूज। बिकॉज अगर पोटेंशियली गुजरात आज का मैच हारता है, सिर्फ 5 मैच बचेंगे उनके सीजन में और पोटेंशियली हर मैच एक नॉकआउट मैच, मस्ट विन मैच हो जाएगा गुजरात के लिए, टू क्वालिफाई सेफली। अदरवाइज you always know there are those combinations. I mean, RCB fans must be very familiar with that. But yes, Pratik, what would you like to add? Well, Yazad, so from my point of view, the only differentiating factor for today's game is that UP Warriors in the previous game got their batting order sorted, and Gujarat Giants still haven't gotten it done. Previous time around, Kiran opened with Alisa Healy, and they were the ideal mixture of the openers that were required, and it also showed as to how that plays a very crucial factor in a team's victory, because both of them got off to brilliant starts, which laid the foundation for the batters to come. And they do not possess big hitters at the end of their innings, but it's just about the small contributions that everyone pitches in and makes, which contributes to a huge team total. So I think that move in the previous game was a good one, although Vrinda was injured, and with no disrespect to her, as uh, a luck in disguise, it just favored them. And on the other end of it, Gujarat Giants, they have been facing quite some issues at the top of the order. Although they have gotten some very fantastic batters, it's just that they need to fall in place and come into one order to culminate everyone's efforts and get the runs coming on. So a lot of questions will be answered today when we see that batting lineup roll down.
So yeah, an interesting matchup. UP Warriors coming confident into this matchup with a win, but I just hope that Gujarat also get on here, or else, like you mentioned, it's just going to get difficult for them. Definitely. So now let's move on to the fantasy picks for today. So let's start off with Julie. Julie, why don't you get us running? Right. So I've chosen two wicket keepers here for the obvious reasons. We have Elisa Healy and Beth Mooney. Both of them will be there in my fantasy picks. Then we'll have batters in Grace Harris, Phoebe Litchfield, Kiran Navgire, all-rounders Deepti, Talia, Ashley Gardner, and bowlers in Sophie Eccleston, Tanuja Kanwar, and Anjali Sarvani. So here I'm banking on Healy, Mooney to come out well for the respective, obviously, as batters as well as captains and wicket keepers. So quite a common roles here for all for the both of them. And then I've kept Talia McGrath also. I want to give her one more chance. She's a quality all rounder. Has been around at the international level for quite some time, though she has not had a good run in the WPL so far. But still, I would like to give her one more chance. And of course, then Grace Harris will be my captain over here. And like she had a good outing in her last match against Mumbai Indians with the bat and ball. So I would like to have her as my captain. And my vice captain will be Sophie Eccleston. We all know that she's world number one T20I bowler, though in this WPL she has only had 3 wickets in 3 matches. But of course, Sophie Eccleston's quality cannot be ruled out. So Eccleston will be my vice captain. And yes, I think this is it. Fantasy picks for me. So moving on to mine, my fantasy 11 for today. So I'm not sure we have a graphic for that, but I'll just read it out to you all. So just a minute. So my fantasy 11 for today consists of the usual, the two keepers that are Alicia Healy and Beth Mooney, because considering that uh, UP do not have a quality pacer up front, scoring will get easier for Beth Mooney. Then we go with the three batters, that is Grace Harris, Navgire, and Sehrawat. Moving on to the all rounders, we have Dipti Sharma, Tahilia Megra, who is my vice captain for today, Catherine Price, and Ashley Gardner, who is my captain. And the bowlers that I've picked are Sophie Eccleston and Tanuja Kanwar. Pratik, over to you for your fantasy 11. Yeah, the graphic is available. Yeah, just a moment. Yeah. Yeah, so my wicketkeeper would be Alisa Healy. Although she's had troubles with the medium pace bowlers, but I'm just hopeful that she'll be among runs. And she also plays an integral role as a wicketkeeper and a captain. And my batters would include Grace Harris, Harman Deol, and Phoebe Litchfield. Adding on to which we have Navgire and Sarawat. So apart from Diol and Litchfield, the others have gotten on runs, and I'm just hopeful these two also pitch in. And we've gotten Deepti Sharma as the sole all-rounder. And for the bowlers, Sophie Eccleston, Leah Tahu, Kanwar, and Anjali Sarvani, all of these girls have lived up to the expectations and, bowled with judicious economic rates. I'm just hopeful that Sophie Eccleston is among the wickets today and the dividends pay off for her. So that wraps up our fantasy picks for today. Let's move on to our key players. So let's start off with UP. So the first key player from UP today is Grace Harris. बतौर ऑलराउंडर और की रोल खेला है उन्होंने यूपी की साइड में. पिछले सीजन भी काफी सक्सेसफुल रही थी और इस सीजन भी एक अहम हिस्सा है वो टीम का. इस सीजन में उन्होंने 93 रन बनाए और 2 विकेट्स भी चटकाए और जब भी बॉलिंग की है उन्होंने काफी इकोनॉमिकल की है. शी इज गॉन फॉर द ऑड बाउंड्री बट अदरवाइज शी इज कंट्रोल द स्कोरिंग वेल. सो जूली, आपका क्या मानना है ग्रेस हैरिस के बारे में आज के एनकाउंटर में? मेरे तो होप्स यही रहेंगे ग्रेस हैरिस का आज अच्छा प्रदर्शन हो, क्योंकि आपने भी फैंटेसी पिक्स में देखा होगा यजाद और प्रतीक वो मेरी कप्तान है. तो आई एम होपिंग दैट शी हैज अनदर फैंटास्टिक आउटिंग अगेंस्ट गुजरात जायंट्स टुडे. तो ग्रेस हैरिस बैटिंग एट नंबर 4 फॉर यूपी वॉरियर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोजीशन इन T20 क्रिकेट. तो अच्छा फॉर्म रहा है अभी तक. हम जैसे कि देखा
93 रन्स आए हैं और उसमें दो 38 रन्स की इनिंग्स है, तो आई थिंक 38 काफी लकी नंबर रहा है, हम कहेंगे ग्रेस हैरिस के लिए। पिछले मैच में भी 38 नॉट आउट थे वो। और आई थिंक जो हार्ड हिटिंग एक बल्लेबाज जो टी20 क्रिकेट में लगता है आपको, आई थिंक ग्रेस हैरिस टिक्स दैट बॉक्स। एंड यूजुअली हम वुमेन्स क्रिकेट में ये कमोडिटी काफी रेयर होती है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज होना। तो ग्रेस हैरिस के पास वो पावर है, वो टाइमिंग के साथ भी खेलती है और टेक्निक भी उनकी स्ट्रांग है, तो एक आई थिंक ऑल डायमेंशनल प्लेयर है ग्रेस हैरिस। और बल्ले के साथ और माफ कीजिएगा, जब गेंद के साथ उनको मौका मिलता है, चाहे वो पावर प्ले के अंदर हो, मिडिल ओवर्स में हो या डेथ ओवर्स में भी, वो आई थिंक किसी भी फेज ऑफ द इनिंग्स में गेंदबाजी कर सकती है। काफी किफायती गेंदबाजी उन्होंने करी है एंड आई थिंक शी नोज हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। समटाइम्स शी इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। अगर उनको पता चल रहा है कि अगर पिच से उनको ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने लेंस वेरी करेगी। अगर उनको टर्न अच्छा मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा फुलर डालने की कोशिश करेगी। तो आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर ऑल्सो आई फील। तो आई थिंक वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी उनके पास है, वो भी काफी काम आया है उनका। और गुजरात जायंट्स के खिलाफ उनको खेलना पसंद है। WPL 2023 में दोबारा याद दिलाना चाहूंगी आपको, यहाँ पे 2 बार आमने सामने आई थी ये टीमें। दोनों बार प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? ग्रेस हैरिस। दोनों बार उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। तो आई थिंक जीजी के सामने उनको खेलना पसंद है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक उनकी जो फील्डिंग है, वो हेली मैथ्यूज का कैच जो उन्होंने पकड़ा था, आई थिंक वो मुझे अभी भी याद है। काफी अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा था। आई थिंक लॉन्ग ऑन पे वो खड़े थे और अगर वो कैच छूट जाता उनसे तो आई थिंक रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था उस मैच का। तो आई थिंक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑल 3 डिपार्टमेंट्स शी इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, जैसा आपने मेंशन किया उस कैच के बारे में, काफी वो जितना उन्होंने इजी दर्शाया वो कैच को, वो उतना इजी था नहीं। एंड इट्स नेवर इजी फील्डिंग अंडर लाइट्स एंड एट द बाउंड्री, so she adds that three-dimensional touch to any side. So Pratik, what would you like to add about Grace Harris? Well, like mentioned, Grace Harris is that player you would love to have on your side because she's gotten all ends covered. And, starting off with her bowling, she can play as that floater, bowl whenever required in the innings and, take things into control. So that is one very positive aspect. And in the previous outing, we did see that a few catches dropped off her bowling, or else she would have definitely gone up on the wickets tally. But she's been hitting consistent lines and not trying too much. The sheer reason being, she has a very basic action and with not too many, variations. But one thing to admire about her is the way she keeps it simple, wicket to wicket, and batters do struggle on a constant basis. And about her batting, time and again we've discussed about the power she possesses and the way she uses the angles extremely effectively. So in today's game, I think she would be the aggressor just like every day, and I'm hopeful she gets going with that quick start of her she's known for. So to make sure that things pan out extremely smoothly for her side. Moving on to our next key player from the UP Warriors today, that will be Sophie Eccleston. So Sophie Eccleston उनके स्टैंडर्ड से थोड़ी ऑफ कलर रही है इस सीजन, फिर भी काफी किफायती बॉलिंग की है उन्होंने। और 3 मैच में 3 विकेट्स ली है, which do not do justice to the bowling she's done, because there's been the occasional catch drop, missed chance of a bowling. So she will definitely play a key role today. And Pratik, what would you like to tell us about Sophie's role in today's game? Well, it's quite unfortunate that Sophie hasn't been among the wickets this season because she's also been one of the most economical bowlers. Her economy rate hasn't spiked above 6.5. In any of the games. It's just that the batters aren't trying to attack her on a constant basis because they know, the variations she's gotten up her sleeve. And somewhere I feel because of this approach of the batters to play it very conservatively, wickets aren't coming by her. In their previous outing, Natalie Cyberbrunt began her innings with a paddle sweep against Sophie Eccleston, and as far as I remember, that was the only attacking shot that was undertaken. Otherwise, her lines have been extremely full between the middle and off stump and in the good length area. So yeah, I'm just hopeful that the opponents do attack her so that she comes among the wickets today. But other than that, there's nothing to worry as such because she's doing her job as a bowler, and wickets would just come as we go into the tournament.
और जूली, आप क्या ऐड करना चाहेंगी इस सोफी एकिल्सन के फॉर्म के बारे में? मतलब फॉर्म तो उनका अच्छा ही है, इट्स जस्ट दैट शी इज नॉट गेटिंग एज मेनी विकेट्स दैट शी और यूपी वॉरियर्स वुड लाइक फ्रॉम हर एंड. सो नहीं, व्हाट मैं वुड यू लाइक टू say? यहाँ पे मैं प्रतीक से काफ़ी सहमत हूँ, जो बल्लेबाजों का अप्रोच रहा है सोफी एकिल्सन के खिलाफ, कि वो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव उनके खिलाफ खेलने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, शायद 4, 5 या 6 रन भी आ गए एकिल्सन की ओवर से, तो आई थिंक वो बल्लेबाजों के लिए एक छोटी-सी मोरल विक्ट्री हो जाती है। तो आई थिंक वही एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि सोफी एकिल्सन हैज़ नॉट बीन अमंग विकेट्स। तो अगर हम पहली मैच देखें तो वहाँ पे आई थिंक उन्होंने 26 रन खाए थे 4 ओवर में, तो अगर हम इकोनॉमी देखें तो 6 से थोड़ा ऊपर। हालांकि सेकंड मैच आई थिंक उनको काफी रन पड़े थे, जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो मैच हुआ था 31 रन पड़े थे 3.3 ओवर में, तो तकरीबन 10 की इकोनॉमी थी। बट उसके बाद जो तीसरी मैच उन्होंने खेली थी एमआई के खिलाफ, वहां पे दोबारा 25 रन ही उन्होंने दिए थे, तो वापस वो 6 के अराउंड का जो इकोनॉमी रेट है जो टी20 क्रिकेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आई थिंक यही है, सोफी एकिल्सन खुद को भी यही मालूम है ऑफकोर्स कि बल्लेबाज अगर उनके सामने ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे तो उनको विकेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो मे बी जस्ट एक ऐसा ही थॉट कि शायद थोड़ा सा आई थिंक एक थोड़े जो हम लूज बॉल्स कहते हैं या डैंगलिंग कैरेट्स, अगर वो वैसे फेंके अगर बल्लेबाजों के सामने, जस्ट टू ट्राई आउट, कि कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा वो ललचाए बल्लेबाज को कि चलो मैं तुम्हें फुल टॉस देती हूँ, या चलो मैं तुम्हें एक अच्छा ड्राइव करने के लिए बॉल देती हूँ, अगर वैसे हो और अगर बल्लेबाज मिस टाइम करे और जल्दी उनको एक आध दो विकेट अगर जल्दी मिले ना उनके फर्स्ट या सेकंड ओवर ऑफ द स्पेल में, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा और शायद ज्यादा विकेट्स हमें देखने मिले उनसे। बट आई डोंट थिंक टेक्निकली कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है एकिल्स्टन को, और एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है आज उनका दोबारा। बिल्कुल. अब एक लुक लेते हैं टुवर्ड्स गुजरात जायंट्स की प्लेयर. वी हैव ओनली वन की प्लेयर फॉर देम टुडे, दैट इज तनुजा कन्वर. एक इमर्जिंग प्लेयर एक तरीके से कहा जा सकता है फॉर द गुजरात साइड, और ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर रही है अभी तक. उन्होंने उनके मैचेस में 32 रन्स बनाए हैं और 3 विकेट्स भी लिए. और apart from that, her being in the top few run getters of Gujarat and also the top few wicket takers of Gujarat, from a Gujarat Giants perspective, is a worrying sign, because you don't want these figures कि 32 runs में आप one of the few top scorers है और 3 wickets के साथ भी आप one of the few top wicket takers भी है. So जूली, आप क्या कहना चाहेंगी तनुजा के बारे में? I think Tanuja has been the only positive, if I can say that, for if I can take this liberty of saying, for Gujarat Giants, क्योंकि हमने पहला मैच हमें याद होगा गुजरात जायंट्स ने जो खेला था एमआई के खिलाफ, वहां पे उन्होंने वो जो 28 रनों की एक पारी खेली थी और वो कैथरीन ब्राइस के साथ जो साझेदारी उनकी हुई थी 48 रनों की, तो वो एक मैच्योर्ड इनिंग्स हमें देखने मिली थी तनुजा कंवर से। हालांकि उनके पास काफी डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी है, हिमाचल प्रदेश से आती है पर रेलवेज के लिए अपना क्रिकेट खेलती है, तो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जरूर है उनके पास, पर डब्ल्यूपीएल इतने बड़े लेवल में खेलना, वो भी इतने मेच्योरिटी के साथ, वो देखने में काफी मजा आया था। और पहला मैच वो काफी इंप्रेसिव रहे। हालांकि दूसरे मैच में ज्यादा उनको बल्ले के साथ मौका नहीं मिला, केवल 4 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे उस मैच के अंदर, एक विकेट भी चटकाई थी। पर आई थिंक तनुजा का रोल दोबारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, आर्म बॉल्स जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, इनके पास भी अच्छे आर्म बॉल्स है, ज्यादा टॉल नहीं है, एकिल्स्टन की तरह वो ऊंची खिलाड़ी नहीं है, पर उनको भी उनके लिमिटेशंस पता है, तो कभी कभी जो राउंड आर्म एक्शन उनका हमें देखने मिलता है या विद द कैप जो वो बॉलिंग करती है, तो आई थिंक शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, टू द फील्ड वो बॉलिंग उनकी रहती है। तो आई थिंक दोबारा उनका जो एक ऑलराउंडर के तौर, शी इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वो रोल इंपॉर्टेंट होगा। बट ऑब्वियसली गुजरात जायंट्स चाहेंगे कि तनुजा तक बल्लेबाजी ना जाए, टॉप ऑर्डर से रन आए, पर अगर उनके पास मौका आता है बल्लेबाजी करने का, तो I don't think she'll disappoint Gujarat Giants today. बिल्कुल. Like from a Gujarat perspective, we are hoping that the top 4-5 batters get the job done for you. That is your Australian all-round Australian players, which include Ashley Gardner, your Phoebe Litchfield, and Beth Mooney, the captain, keeper, and the batter. So Pratik, what would you like to tell us? Well, so apart from Gujarat's state currently, and their batters not performing, but apart from that, it's a great positive to see Tanuja playing to the best of her abilities. Firstly, with her batting, we've seen her coming at a very
pressure situation where she's maneuvered the ball in the right areas and has gotten going, after which she started scoring boundaries fluently. So she's a very reliable player at the back end of the innings, and we've anyway seen that when batters have collapsed, she's stood up. So I'm hopeful to see more such innings from her. She may not be a powerful hitter of the ball, but she's someone who's gotten the angles in her mind and plays to the pace of the ball and makes a good use of the angle. And when it comes to bowling, she's someone who lofts the ball, not someone who bowls it quick or fires it into the pads of the batters. So that would play to the strength of her. And one thing, all of us we wouldn't want to see is her bowling short, because on multiple occasions we've seen that whenever she's gone short, she's gone for runs because of her height as well. Like Julie mentioned, it makes it easier for the batters to latch onto the short ball and go for the runs. But nevertheless, I'm excited to see her play today. Now let's take a look at today's match from a fan perspective. So, like we all saw in the previous match against the Mumbai Indians, the UP Warriors opening batter Rinda Dinesh was injured while fielding. एक तरह से कहा जा सकता है blessing in disguise था वो उनके लिए, क्योंकि उनके जगह ओपनिंग में आई किरण नवगिरे और she took the bull by the horns, as we say. उन्होंने ऐसी explosive बल्लेबाजी की at the top of the order कि they eventually UP Warriors chased down the total without breaking a sweat per se. So her being a potential opener in today's game and going further in the tournament for the UP Warriors is definitely what we'd like to discuss today. So Julie, आपका क्या कहना है किरण के बारे में as a potential opener? We all know she's opened in domestic games, but at the WPL level. आई थिंक यूपी वॉरियर्स को एक्सीडेंटली उनकी ओपनर मिल गई, यहाँ पे मैं कहूँगी वो एक्सीडेंटली होना होगा, क्योंकि वो वृंदा दिनेश की वो फ्रीक इंजरी शोल्डर पे फील्डिंग करते वक्त और दोबारा फिर किरण नवगिरे को मौका मिलना बतौर ओपनिंग बल्लेबाज एलिसा हीली के साथ, एंड उनको मौका मिला पर उन्होंने वो मौका भुनाया, उन्होंने बहुत बढ़िया वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा और एक बेहतरीन अर्धशतक उनसे हमें देखने मिला. एंड आई थिंक इट इज द फास्टेस्ट 50 इन दिस WPL सीजन and the fourth fastest 50 in the history of WPL over the last 2 seasons. तो यही दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी मिली पर उन्होंने वो ग्रैब भी करी और अच्छा प्रदर्शन करा. तो उनके जब आंकड़े हम देख रहे थे स्कोर कार्ड के ऊपर भी, तो जो 57 रनों की पारी थी उसमें अगर हमने देखा तो 6 चौके हैं और 4 छक्के हैं, तो मतलब 48 रन 48 रन बाउंड्रीज के रूप में आए हैं, तो केवल 9 रन ही उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल्स या डबल्स से लिए हैं. और उसके अलावा भी आई थिंक जब मैंने वो वैगन व्हील उनका जब स्टडी करा था, तो किरण नवगिरे एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने सिर्फ कवर्स और मिड विकेट ये एरिया के बीच ही उन्होंने अपने रन स्कोर करे और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 रन फाइन लेग की और उन्होंने सिंगल्स के रूप में लिए हैं. तो जब भी हम T20 क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बल्लेबाज है, कुछ इनोवेटिव शॉट्स खेलेंगे, कुछ चीकी शॉट्स खेलेंगे, बट आई थिंक किरण ने काफी कन्वेंशनल क्रिकेट खेला और यही दिखा दिया कि कन्वेंशनल क्रिकेट से भी आप रन बना सकते हो, और वैसे अच्छा प्रदर्शन उनसे हमें देखने मिला. और आज मुझे लग रहा है कि आज और एक मौका है उनके पास कि वो अच्छा बल्लेबाजी करे, यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करे. और जस्ट टू मेंशन कि जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी जो इनिंग्स थी वो इजी वॉन्ग को उन्होंने जो 4 चौके लगाए थे, आई थिंक दे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड. तो वैसे ही मैं कुछ होपफुल हूँ कि आज दोबारा वो आए, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करे और अच्छी स्टार्ट दे यूपी वॉरियर्स को. बिल्कुल. Pratik, what would you like to tell us about the firepower that Kiran Navgire brings to the top of the table, at the top of the order, along with Alicia Healy, who's another explosive opener? Well, like you mentioned, Azad, she's someone who complements Elisa's way of batting, and I think that has worked to their favor because she only has one way of playing, and that is by going aggressive and all in. Someone who has no intentions of keeping it down, because in the power play, you've only gotten a couple of fielders outside the ring, and she's made the best use of it by playing some freehand strokes. So, extremely well done on that. And about her opening in the coming innings, I don't see any problem on that because she's gotten the runs and she looks quite comfortable with the new ball as well. And by her playing in such a fashion, it would give Elisa Healy
to settle down and rotate strike around and to also stay till the latter half of the innings. So I think Kiran Navgire is a great prospect for them right now, and I hope that they build on this. So moving on to our fan perspective from the UP Warriors, from the Gujarat Giants perspective. So for the Gujarat Giants perspective, it is Beth Mooney. At the start of the season, we discussed कि कैसे उन पर बहुत ज़्यादा responsibilities है, opening the batting, wicket keeping, and also, you know, it's the in general lack of experience within the Gujarat Giants playing 11, because there is a lot of young Indians that we see in there. And also Phoebe Litchfield, who is a foreign player, but she does not have that much of an experience per se. She's had a good run recently in the T20 formats, that is the international, as we speak about the bilateral series with India. But she's been, low on confidence and on runs recently. So Julie, आपका बेथ मूनी के पुअर फॉर्म तो नहीं कहा जा सकता है, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा सकता है, टू मच ऑन अ प्लेट, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आई थिंक काफ़ी सिमिलैरिटीज मैं ड्रॉ करूंगी हीली और मूनी के बीच। जो हमने हीली के साथ देखा था पहले 2 मैचेस में, उनके साथ हो रहा था कि जो ओपनिंग पार्टनर से कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे थे, जब वो आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आई थिंक उनके इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होता है और टीम के सक्सेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आई थिंक बेथ मूनी को अगर एक एबल अलाय मिल जाए ओपनिंग पार्टनर के अंदर, तो आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली गेट सॉल्व्ड, ऐसे मुझे लग रहा है। और आई थिंक एज बेथ मूनी पर्सनली आई फील कि उनको जब वो बल्लेबाजी के लिए आज उतरे यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो पेस अटैक है यूपी वॉरियर्स का, अंजलि सरवानी जिसको हम देखेंगे जरूर, तो उनके खिलाफ थोड़ा सा आई थिंक कॉशियस अप्रोच अगर उनका रखा उन्होंने और बाद में उनके रन स्कोर करने की कोशिश करी, तो वो अच्छा हो सकता है। क्योंकि दोनों मैचेस में हमने देखा है कि शी हैज फेल प्रे टू पेस बॉलर्स ओनली। पहली बार उनको इस्माइल ने आउट करा था, दूसरी बार मेरे ख्याल से दूसरा मैच किसके साथ हुआ था, आई थिंक दूसरा बार रेणुका सिंह ठाकुर, करेक्ट, आरसीबी के साथ जो मैच हुआ था, तो दोनों बार पेसर्स ने उनको आउट कराया। तो आई थिंक थोड़ा पेसर्स के खिलाफ कॉशियस अप्रोच अगर उनका रहे और फिर बाद में रन स्कोर करने की कोशिश करे तो वैसे हो सकता है। बट मूनी एज अ प्लेयर हमें आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है उनके एबिलिटीज के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि एक अच्छी प्लेयर है वो। बट आई थिंक जस्ट टू मेनी थिंग्स ऑन हर प्लेट, कैप्टनशिप, विकेट कीपिंग एंड ओपनिंग बैटिंग। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ओपनिंग पार्टनर अच्छा मिल जाए उनको और उसके बाद आई थिंक सब स्मूथ होगा जीजी के लिए। So Pratik, do you think that at any point is Beth Mooney being overburdened by the responsibilities at Gujarat Giants? I think Julie articulated it quite well that she's gotten a lot on her plate. And, even in her first innings where she scored about 22 runs, the 22 runs that came by weren't in authentic Beth Mooney fashion because, she's very elegant to look and plays very freely. And when a player is doing good and is in good form, but that is not something I felt. The runs she accumulated was not quite satisfactorily done like she always does. So again, just the UP Warriors sorted out their opening stand. I'm hopeful that Gujarat also today come up with a solution, or the existing openers do a good job by going out with a positive outlook, because it's very important for Mooney to get going, and also the fact that a player like Mooney, as we approach the business end of the tournament, it's important for them to step up given the amount of experience they come up with and their understanding of the game. So just like everyone else, I'm hopeful that Mooney gets some runs under her belt today. Okay, so let's move on to our matchups for today. So our first matchup for today is Tahila Maghra versus Pace. So Tahila Maghra बतौर ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया की, पिछले सीजन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बट एक ऐसा मैचअप है जो I personally wasn't expecting, because I personally feel she's a good player of pace, but the stats suggest something else. उनका average pace के against 14.38, which is a drop from 25.11, which is her overall average in women T20s. So Julie, आपका क्या कहना है आज के मेगरा के मैचअप के बारे में? How she should be countering this? मेरे ख्याल से किसी भी बल्लेबाज के लिए जब वो स्टार्ट करती है तो वो पहले 4-5 जो बॉल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई थिंक
तभी वो बल्लेबाज को पता चलता है कि आज मैं मिडल कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और वो जोन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो आई थिंक तालिया मैकग्राथ के साथ इफ वी लीव दैट फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक उन्होंने जब 20-22 आई डोंट रिमेम्बर कितने रन करे थे उन्होंने, पर उसके बाद 2 मैचेस में उन्होंने केवल एक एक रन ही बनाया था एमआई और डीसी के खिलाफ जो मैच हुआ था। तो आई थिंक शी हैज टू गेट हर फीट मूविंग। अभी ऐसे लग रहा है उनको जब भी वो बल्लेबाजी करने आते हैं कि ऐसे वो जम गए उनके पैर क्रीज के अंदर, ज्यादा फुट मूवमेंट हो नहीं रहा है। आई थिंक थोड़ा सा माइंड भी आई थिंक क्लटर्ड लग रहा है मुझे उनका जब भी वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। बट आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन मैच, क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी पता है कि तालिया मैकग्राथ इज अ क्वालिटी प्लेयर। आई वुड रेट हर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो अच्छी बल्लेबाजी वो करती आई है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और पिछले कुछ डोमेस्टिक मैचेस भी अगर हम उनके देखें जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते, वुमेन्स नेशनल क्रिकेट लीग हो या WBBL हो, तो वहां पे भी वो अच्छा प्रदर्शन करती आई है। पर इस WPL में आई डोंट नो फॉर सम रीजन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है मुझे। बट आई थिंक वही रोल क्लैरिटी जिसकी मैंने पहले भी अपने डिस्कशंस में बात करी है, अगर उनको मिले और अच्छे से, तो हमें एक बेटर तालिया मैकग्राथ देखने मिलेगी। अदरवाइज देयर इज नो डाउट अबाउट अ टैलेंट। बिल्कुल, कोई कोई ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि शी डज नॉट बिलोंग एट दिस लेवल, बिकॉज वी सीन हर टाइम एंड टाइम अगेन, पुटिंग अप परफॉर्मेंसेस which have eventually gone on to define the course of the match. So Pratik, what would you like to tell us about Talia's plan today to address her batting worries per se? Well, she's definitely looked a little rusty in all the outings she's had, and more so in the previous game where she was caught in the front against Izzy Wong. The ball steamed back in, and she couldn't get her foot anywhere, and she got cramped. So that wasn't a really good sign, because on any other day she would have put a foot front and flicked it off to the leg side, but for today, I think. Those first couple of balls, or the first 15 to 20 balls, are important for her to build on from there. Get your front foot out of the crease and drive a few, and make use of the loose deliveries, and she'll definitely be among the runs. We're just a couple of games into the tournament. Although she's not gotten runs, I don't think that it is a worry as such, because time and again she's come back stronger from whatever downfall she's had. So yeah. Okay, moving on to our next matchup for today. Phoebe Litchfield was one of the most discussed players going into this edition of the WPL, because we know she had a great bilateral series when Australia toured India, and she was seen leading the batting charge for Australia. So Phoebe Litchfield, उनका average overall है 26.03, but she faces a similar problem like much Australian batters we've ironically seen facing, that her average versus pace drops to 14.96. Today should not be much worries, but this is a stat we'd like to highlight. So, Julie, what do you have to say about Litchfield's game plan today? लिचफील्ड आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेयर है, 360 डिग्री प्लेयर हम उसको कहते ही आए हैं। ग्राउंड के चारों ओर वो शॉट्स लगा सकती है। पर इस WPL के अंदर हमने देखा है कि दोनों बार उनको पेसर्स ने आउट करा है। तो आई थिंक वो भी उनके मन में रहेगा। पहली बार जब NSB ने आउट करा था, दूसरी बार रेणुका सिंह ठाकुर ने उनको आउट करा था, और सिंगल डिजिट्स के अंदर ही आउट हुए हैं फीबी लिचफील्ड। बट आई थिंक मैं मुझे थोड़ा उनके गेम के अलावा बात करना, आई थिंक समथिंग एल्स इज प्लेइंग ऑन हर माइंड इज व्हाट आई फील पर्सनली। जैसे यजाद और प्रतीक, हमने वो प्राइस टैग प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करा था हमारे एक डिस्कशन के अंदर। तो आई थिंक इफ वी रिमेंबर, फीबी लिचफील्ड वाज द फर्स्ट प्लेयर टू बी पिक्ड इन द ऑक्शन ऑफ WPL 2024। शी वाज द फर्स्ट प्लेयर नेम्ड, अनाउंस्ड एंड ऑब्वियसली पिक्ड ऑल्सो, और उनको 1 करोड़ में पिक करा था गुजरात जायंट्स ने। तो आई थिंक एक यंगस्टर को, 19-20 साल की ही प्लेयर है ये, तो जब भी एक यंगस्टर के लिए इतना वो प्राइस टैग का प्रेशर होता है, तो कभी कभी वो गेम पे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। बिकॉज इफ वी रिमेंबर, 2023 उनके लिए बहुत बढ़िया था फीबी लिचफील्ड के लिए। T20 क्रिकेट के अंदर उन्होंने फास्टेस्ट 50 भी लगाई थी, जो वुमेन्स T20 क्रिकेट होता है। सोफी डिवाइन के साथ ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड होल्ड करती है, 18 गेंदों में वो फास्टेस्ट 50 भी लगाई थी। उसके बाद नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए एक अच्छा 100 का सीजन भी रहा था उनका लास्ट ईयर। और उसके बाद जब ऑक्शन में उतरे, उनको ऑब्वियसली पिक भी करा गुजरात जायंट्स ने। तो उनके टैलेंट के ऊपर किसी को डाउट नहीं है, काबिलियत रखती है ये प्लेयर। बट जस्ट दैट आई थिंक जैसे तालिया मैकग्राथ के साथ हो रहा है, आई थिंक फीबी के साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा है। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन या क्लटर है दिमाग में, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा शी केम इन टू बैट एट नंबर 3।
एक मैच में नंबर 4 पे आई थी वो बल्लेबाजी करने के लिए। तो आई थिंक वो जीजी इफ दे आर एबल टू सॉर्ट आउट दैट बैटिंग ऑर्डर कि कौन से नंबर पे आएगा, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली ऑल थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बिल्कुल. So role clarity is something we've been associating with Gujarat Giants all season this year. Pratik, what would you like to tell us about this Phoebe Litchfield matchup? Well, like mentioned about the role definition, I would personally like her to, come at the top of the order or even open the innings because she's very fluent with the faster bowlers and she's gotten a good technique to combat swing and pace. And majoritively, she relies on her top hand as well. So I'm not quite sure as to what the strategy is bringing in her at two down, where she's also exposed to spinners and the ball wears out a little bit and does not come onto the bat in a pleasing manner. And given that she's played all her cricket in Australia, where it's all seaming and coming onto the bat quickly, and then coming to bat here at number four might be quite a challenge for her. We've also discussed that she's a youngster and hasn't gotten that much of an exposure around the leagues that go around in the world. So maybe batting at the top of the order or even batting at one given position for around 2 to 3 games so that she knows as to what is expected out of her and she can diligently deliver what is required. So I'm hopeful to see that role definition in display from here onwards. So, before we move on to the predictions for today, we'd like to entertain a fan question. So, the question is from Chaitanya Rajans. The question reads, Laura Woolward should play ahead of Bryce, then Gujarat Giants would have more chances of winning. So, what do you think? So, I would like to run some stats about Catherine Bryce before we answer this question. She's played two matches for Gujarat this season, scored 28 runs, the highest of 25, which came against Mumbai Indians. And she's also taken one wicket, which includes one maiden, and has bowled at an economy of 7.80. So, Julie, what would you like to tell us? Is this a good replacement if Gujarat were to go ahead with it to strengthen their batting? Actually, very nice question by Chaitanya. But what I would like to tell Chaitanya here is, fortunately, Gujarat Giants is one of the teams that has the luxury of playing five overseas players. They can have four players and one player from associate nations. So they can have Catherine Bryce also, Laura Woolward also in the team. But if I am asked this question, I would like to replace Leah Tahuhu probably with somebody like a Laura Woolford, because we have seen that Leah Tahuhu has not been in the greatest of forms. She bowls at medium pace. She is not even express pace. She has not been bowling those incisive or probing lines or lengths. And probably it is time that Laura Woolford, who is also a good opening batter, and Gujarat Giants at the present moment is facing difficulties with the opening pair. Probably Laura Woolford could fit the bill and probably replace Tahuhu so that we can have Bryce also, because Bryce is a good all rounder. If we see for Scotland, she bats top of the order, and then she also gives those crucial overs. She can also open the bowling. So I think instead of Bryce, probably Gigi can think of replacing Tahuhu with Woolward. And Pratik, what are your views on this potential replacement? Well, on one side, having Laura on your batting top order would mean the world to you because she's one gun of a batter and she's a very consistent contender as well. But opposed to what Catherine Bryce brings to the table is, all three aspects of the game. She bats, she bowls, and she's also agile on the field. So that would not be a like-to-like replacement. And like Julie said, maybe replacing her with Leah would make much more sense. But it is interesting as to what the management would do, and I guess we would get to see quite a few changes today because of their consecutive losses. So they might want to get their winning combination right. So I'll quickly take your predictions as we wrap up today's show. So Julie, would you like to go first? I think it's UP Warriors for me today. Okay. And Pratik, what about you? Well, again, it's a no-brainer. UP Warriors, they've gotten things covered for now, and they're also riding high on confidence. So I'm hopeful that the same thing continues for them. So that's all from today's show. We'll see you all again tomorrow and discuss whether Gujarat Giants managed to get their
tournament back on track, or did UP continue their good run after having beaten Mumbai Indians in the previous match? That's all for today. Thank you guys. Thank you for joining in.